operational amplifier is IC. IC741 is the first operational amplifier. Why the name given to this IC operational amplifier? It is because in earlier days this IC was only used for mathematical operations, इसलिए इसको operational amplifier कहा गया. But nowadays उसके बहुत सारे applications निकाले गए हैं and we use this IC not only for mathematical operations. Now we will see the block diagram of op-amp. Op-amp is operational amplifier. The input, there are two inputs V1 and V2, which is the input to the input stage. Input stage is a difference amplifier, differential amplifier, dual input, balanced output, differential amplifier is this. The output of the input stage is given to the intermediate stage. The circuit used here is dual input, unbalanced, balanced output. This is again a differential amplifier. The output of this level is given to a level shifter. Level shifter is a circuit like emitter follower. Emitter follower. First we will try to understand what is the use of this level shifter circuit. A differential amplifier has the property that it shifts the DC level of its input voltage. So उस DC level को जो shift यहाँ और यहाँ ये दोनों ब्लॉक से मिला है, उस DC लेवल को फिर से 0 लेवल पे लाने का काम लेवल शिफ्टर का है. Now the output of level shifter is given to the output stage. Here current gain is given to the input and generally it is made up of push-pull amplifier. Push-pull amplifier is a power amplifier which gives current gain, and ultimately output of this output stage is the ultimate output. This is the symbol of op-amp, a triangle. This is an inverting input. This symbol is for non-inverting input. This is for positive VCC voltage supply and this is for negative VCC negative supply, and the output is taken from here. This is the equivalent circuit model of op-amp. This is the input resistance. This is the output resistance. This is the voltage source which is given by AV0, where A is the gain of this op-amp and V0 is the output voltage. Now we will see the ideal voltage transfer curve of op-amp. This is the voltage transfer curve. See here VID, it is a curve between VID. VID is the difference between V1 and V2. जो difference है दोनों इनपुट का, op-amp के दोनों इनपुट का जो difference है, it is given by VID and Vout is the output voltage. अब V1 minus V2, अगर V1 बड़ा है और V2 छोटा है तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा और हम इस रीजन की बात करेंगे, लेकिन अगर V1 छोटा है और V2 बड़ा है इनका डिफरेंस नेगेटिव होगा और हम इस तरफ की बात करेंगे. Now when VID is positive, और सबसे पहले देखते हैं जीरो पे क्या होता है. जब VID जीरो है तो आउटपुट शुड बी जीरो बिकॉज A इंटू VID विल बी द आउटपुट. ना जैसे जैसे VID पॉजिटिव में बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, बिल्कुल इस तरह से प्रोपोर्शनली इट इज गोइंग टू इंक्रीज. लेकिन कुछ समय के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा और ये सैचुरेशन पॉइंट होगा VCC के बराबर या उससे थोड़ा सा कम. तो जितना वोल्टेज आप पावर सप्लाई देते हैं आउटपुट विल नेवर एक्सीड दैट पावर सप्लाई.
नाउ व्हेन VID इज नेगेटिव, तो जैसे जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में हम VID बढ़ाएंगे वैसे वैसे Vout बढ़ता जाएगा, लेकिन ये भी जाकर के एक जगह पे सैचुरेट हो जाएगा और इसको हम कहेंगे नेगेटिव सैचुरेशन। और ये पॉइंट जहां पे ये सैचुरेट हो रहा है इट विल बी नियर अबाउट -VEE, द नेगेटिव वोल्टेज विच वी हैव अप्लाइड टू द op-amp। तो फ्रॉम दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इट इज वेरी क्लियर कि या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, द आउटपुट कैन नॉट एक्सीड द पावर विच वी हैव अप्लाइड टू इट। See, A is equal to gain is given by output upon input. So output of this is output voltage Vout upon input is VID. Gain of an ideal op-amp is infinite. So VID will be given by Vout upon infinity, which is equal to 0. So VID is the difference between the two inputs V1 minus V2, which is equal to 0. That means V1 is equal to V2. So whatever is V1, V2 ultimately it becomes the same. If we ground V2 को अगर हम ग्राउंड करते हैं तो V1 अपने आप ही ग्राउंड हो जाता है। तो दिस इज नोन एज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। This is the circuit diagram for inverting amplifier. In this circuit, the current I1 is equal to IF. This is because the input resistance of op-amp is so high that I2 is 0. So I1 is equal to IF. So we can write I1 is equal to V1 minus V1 upon R1, which is equal to IF is V1 minus V0 upon RF. Because of virtual ground concept, V1 is equal to V2, but V2 is grounded, which is equal to 0, so V1 is also 0. The gain of this amplifier is Vout upon Vin, which is equal to minus RF upon R1. This is the non-inverting amplifier using op-amp circuit. Here we apply VCC and minus VEE. Now the input is given to the non-inverting terminal. I1 is going to be IF because I2 is going to be, the expression will be written like this. So the gain of this circuit will be 1 plus RF upon R1